Today we discuss about how do we calculate time from prime meridian. This is the part of the second lesson, latitudes and longitudes. Now for the class of 6 geography part. Now as we know that over Earth some imaginary lines, longitudes drawn from North Pole to South Pole. It means one is the common line, या कह सकते हैं one is the most important line which is prime meridian. This is the imaginary line which goes from the Greenwich Observatory from London, it may be say England, and the time of India is ahead of the prime meridian is 5 hours 30 minutes. Listen carefully. The time of India is ahead from the prime meridian from 5 hours 30 minutes. Now, the Indian Standard Time is taken from the 82 degree 30 minute east longitudes. It means this is the 0 degree and 82 degree it means, suppose this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is the 82 degree 30 minute east. It means India is divided half of this and this length taken from. Now I will show you on the map. (97 degrees 25 minute east and 68 degree 7 minute east. Okay, this is the half line goes from the Mirzapur, Uttar Pradesh, and this is the 82 to 30 minute east. Now, if I say today is the time, right now it's 8 a.m. It means what is the time of London? It means I will go backward from 8 a.m. to backward side. How much hour? 5 hours 30 minutes. It means 7, 6, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 30 minutes और लेस करेंगे, इट मीन्स 2:30. So 2:30 is the real time of the prime meridian. It means London. तो अभी यहाँ हमारे यहाँ 8 बज रहे तो वहाँ पे 2:30 हो रहे हैं. इसका मतलब वहाँ मॉर्निंग के 2:30 हो गए हैं और हमारे यहाँ ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि अभी जो सन है वो यहाँ पर है. धीरे धीरे जो सन है वो सीधा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, यानी अर्थ जो है वो गोल सर्कल मतलब स्पिन करेगी, रोटेट करेगी. तो जो सनलाइट ऑफ सीधी फॉल वन जो लॉन्गिट्यूड है उसके बाद दूसरे लॉन्गिट्यूड पे, उसके बाद अगले लॉन्गिट्यूड पे, फिर अगले लॉन्गिट्यूड पे, फिर वहां पे क्या मॉर्निंग हो जाएगी. तो एज वी नो दैट वी डिस्कस अबाउट अर्लियर फ्रॉम द 0 degree prime meridian, the next one is 1 degree east and from the other side 1 degree west. The next degree is 2 degree east and the next one is 2 degree west. So as we go further, there are the 180 longitudes and there is also 180 longitudes which merge into 180 degree longitudes. This is the longitude, this is the international date line. So from the distance of 1 degree to another degree, 1 degree to another degree, the real distance between these two categories is 111 kilometer. It means sun takes 4 minutes to reach another degree. Now from 1 degree to next 2 degree. 2 डिग्री पर है तो सन अगले डिग्री पर कितनी देर में पहुंचेगा 4 मिनट्स.
means if we talk about the India's, here is the 97 degree 25 minute east and 68 degree 7 minute east. The difference between the two longitudes is 30 degree, approximate 30 degree. It means in 1 degree 4 minute, it means 30 degree 120 minute. It means the time lag between Arunachal Pradesh and Gujarat is 120 minutes. It means 2 hours. It means 2 hours. Okay, I'll give you some homework. Please do it at your home. We also do it here. Now, right? If London has a time of 9:30 p.m. So what is the time of India? You have to find the time of India. Now hurry up, calculate your time in your notebook. Hurry up. I have understand you. Okay, let's find out this answer. 9:30 PM to ये लंदन का टाइम है. अब हमें इंडिया का टाइम निकालना है. इट मीन्स इंडिया का जो टाइम है वो उससे आगे है, एज वी डिस्कस अर्लियर. तो 9:30 टू हम 5 आवर अहेड आगे चलेंगे. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. इट मीन्स 12:30 यहाँ AM हो जाएगा, यहाँ पे आल्सो AM. 1, 2, 3, 4, 2:30, which means 5. 1, 2, 3, 4, 5. 30 मिनट्स में हमें और एड ऑन करना है. तो 2:30 और 30, इट मीन्स 3 AM. तो हमारे यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 3 AM. बट रिमेम्बर 9:30 PM इज द डेट. जस्ट एज वी नो टुडे इज 21st. इट मीन्स वहां पर अभी क्या हो रहा होगा? 20 होगा. और हमारे यहाँ कितना हो गया? 21 मई 2020. ओके ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. इफ हियर इज द टाइम 12:20 इन इंडिया. टाइम इज 12:20 PM. इट मीन दोपहर के 12:20 हो रहे हैं. तो लंदन में कितना टाइम होगा? तो बहुत सो सिंपल. आप पीछे जाइए इससे. तो 11:20, 10:20, 9:20, 8:20 एंड 7:20. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें 20 और लेस, 30 और लेस करेंगे. तो 30 लेस करेंगे तो सो सिंपल. 30 कैसे लेस करेंगे? कंफ्यूजन वाला होगा, 20 में से 30 कैसे लेस करें? सो सिंपल. तो हियर इज द आवर एंड हियर इज द मिनट. इट मीन्स 1 आवर जो है मिनट को मिनट देगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ तो हो गया 6 और यहाँ पर 30 एड ऑन हो जाएगा. इट मीन्स यहाँ तो 30 एड ऑन हो गया. हमें 30 उसको पूरा 1 घंटा आ गया. तो यहाँ 30, 20 कितना हो गया? 50. यहाँ कितना हो गया? 50. या ये पूरा एक 30 मिनट इसको देगा ना. तो यहाँ कितना हो गया? 50. इधर देखिए, 7:20 में से 30 मिनट लेस करेंगे तो ये इसको पूरा अपना वो दे देगा, 1 आवर दे देगा. तो यहाँ हो गया 6 और यहाँ कितना बचेगा? हमें 30 लेस करना है, पूरा 1 आवर. इट मीन्स 1 आवर दे दिया. तो यहाँ 60 और 20 80 में से 30 गए 50. इट मीन्स 6:50. और कौन सा वाला? PM है, पीछे करना है. तो ये भी क्या है? AM आ जाएगा. ये AM. तो यहाँ पर कितना आ गया? AM. ये समझ में आया? ओके, दोबारा समझाता हूँ. 7
120 हो रहा था तो 30 मिनट लेस करने हैं, सो सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा जो 1 आवर है, 1 आवर मीन्स जो 60 मिनट है वो उसको एड ऑन कर देंगे, इसमें ऐड ऑन करेंगे 60 मिनट। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, क्योंकि हमने 60 मिनट यहाँ पे दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा 680। हमें 30 मिनट लेस करने थे, 1 2 3 4 5 और 30 मिनट हमें लेस करने हैं। तो 8 में से 3 0 पे 0 5 650। अब चाहे तो आप ऐसे भी करके देख लीजिए भाई, 20 लेस हुआ तो 7 आया, अब 10 और लेस कर देंगे तो कितना जाएगा 650। तो दिस इज द टाइम, this is the time as we find. Now these are the today's topic, how do we calculate time from the prime meridian and how do we minus from the hour and minute. Okay, we go further. Let's understand directions. Now here are 4 major directions: east, west, north and south. Remember, east, west, north and south. These are the 4 major directions. And some more directions we have. The sun rises from the east. Remember, the sun rises from the east and sunset in the west. Remember, the sun sets in the west. The sun rises in the east, and the Himalayas are situated in India, over the north part of India, and here are the Indian Oceans, which is situated India's south of India. Some more directions we have if we understand detail. ये थोड़ा सा नॉर्थ है, नॉर्थ जो है मेन डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट and southwest. So remember, we have the 4 major directions: east, west, north, south, and 4 are the other directions: northeast, northwest, southeast, southwest. In our next chapters, the next chapter is maps. We'll discuss all these directions in detail. Now, thank you. Sir. Now, the third desert is situated in our northwest directions, Himalaya in our north directions, and Deccan Plateau is in our south directions. And here are Bay of Bengal is situated in our southwest directions, and Arabian Sea is situated in our India southwest directions. Arabian Sea. So as we know the whole part of India from the directions, so China is in our northeast directions, and Pakistan is in our western part, and also some parts in northwest directions. Sri Lanka is situated in our south, and Andaman and Nicobar is situated in our southeast directions. If you talk about our neighboring country Maldives, so this is situated in southwest directions. So remember the 4 major directions and all other directions. So as we find any place in our India and any place in our earth, this is the helpful for our in daily routine activity. Now, thank you.